Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम रॉबिन्स मीडियम रॉबिन्स से चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं, ओरल कैविटीज और जीआई ट्रैक्ट की पैथोलॉजी. ओरल कैविटी ऑलरेडी कर चुके हैं, इसोफेगस ऑलरेडी कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजीजेस ऑफ स्टमक. अच्छा, disorders of stomach जो हैं they are not only very frequent but also major healthcare burden particularly in the US. और इससे अंदाज़ा करेंगे it's nearly 1/3 of all the healthcare spending is on the GI diseases, जिसमें स्टमक भी ऑब्वियसली शामिल है, इसोफेगस भी है और इंटेस्टाइन भी है. That's a major problem. And similarly gastric cancer remains a leading cause of death worldwide. Therefore stomach is a very important healthcare concern. The stomach is divided into 4 regions. अगर anatomy wise हम बात करें तो इसका एक region cardiac region है. Then there is fundus and obviously there is a body then, and then the last portion which joins with the small intestine is the antrum. और इन तमाम पार्ट्स की हिस्टोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है, जो ऑब्वियसली हम हिस्टोलॉजी में करते हैं, कि हर जगह पे अलग अलग तरह के स्पेशल सेल्स हैं. सो कार्डियक रीजन में फॉर एग्जांपल देयर आर मोर म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स, फोव्यूलर सेल्स दैट फॉर्म द शैलो ग्लैंड्स. सो म्यूकस यहाँ पे ज़रूरी भी है बिकॉज इसोफेगस से जो बोलस ऑफ फूड आता है इट हैज़ टू बी लुब्रिकेटेड क्वाइट अ लॉट. तो म्यूकस चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स हैं. देन एंट्रम के रीजन में देयर आर जी सेल्स which release gastrin, and we also have a lot of other cell categories such as the parietal cells which are numerous in the fundus and the body region. Then we also have the chief cells which produce digestive enzyme pepsin. तो ये histology में हमने और डिटेल में ये पढ़ रखा है. But stomach, the bottom line of these 2 paragraphs is the fact that stomach is a very important healthcare concern. Okay, now gastropathy and acute gastritis. Gastritis result from mucosal injury. अभी देखो, हमें जो पैथोलॉजी डिस्कस करनी है स्टमक की, उसमें वी विल टॉक अबाउट जो हमारा पैटर्न होता है हर ऑर्गन के लिए पैथोलॉजी में, कि वी टॉक अबाउट नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स एंड देन वी टॉक अबाउट द नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स. तो यहाँ भी यही है, स्टमक में हम नॉन नियोप्लास्टिक डिजीजेस की बात करेंगे जिसमें प्राइमरीली गैस्ट्राइटिस है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम कैंसर्स ऑफ द स्टमक. सो एक्यूट गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोपैथी. गैस्ट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक वॉल, यानी म्यूकोजा की इंजरी है, दैट इज गैस्ट्राइटिस. When neutrophils are present, the lesion is usually referred to as acute because of the presence of the neutrophil. When cell injury and regeneration are present, but inflammatory cells are rare or absent, the term is known as gastropathy. Now that's important. अगर inflammatory cells मौजूद हैं, then we use the word gastritis. अगर inflammatory cells मौजूद नहीं हैं and there are still signs and symptoms of mucosal injury, then we usually label it as gastropathy. तो आपको ये difference पता होना चाहिए, the difference between acute gastritis and gastropathy. Okay, agents that cause gastropathy include NSAIDs, non-steroidal inflammatory drugs, alcohol, bile. So NSAIDs जब आप use करेंगे, there may be ulcer formation, there may be mucosal injury in the stomach wall, but उसमें usually immune infiltrate इतने ज़्यादा नहीं होते, so that is usually called gastropathy. Acute mucosal erosion or hemorrhage such as curling ulcer, ये stress में होते हैं. I mean, if somebody is too much stress, it can cause ulcers in the stomach. Okay, so that's an important. ज़्यादा stress ना लिया करें इसीलिए. The term hypertrophic gastropathy is applied to a specific group of diseases. For example, the Menetrier disease or the Zollinger-Ellison syndrome. आगे आएंगे इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे. They are discussed later. Both gastropathy and acute gastritis may be asymptomatic or cause variable degree of epigastric pain, nausea, vomiting. अगर सीवियर केसेस हैं तो अल्सरेशन, हेमरेज, ये हेमेटोमेसिस, ये सब हो सकता है, यानी बंदे को वॉमिट होगा ब्लड वाला, डार्क स्टूल्स होंगे, या पेन होगा अल्सरेशन की वजह से. सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग. इस डायग्राम को देखिए, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम showing you the normal wall of the stomach. There is a mucus, there is mucosa, muscularis mucosa and submucosa. So that's a normal looking healthy layer of the stomach wall. लेकिन अगर कोई भी इंजरी है, फॉर एग्जाम्पल एनसेड्स हैं, एच पायलोरी इन्फेक्शन है, एस्प्रिन, टोबैको, अल्कोहल, ये सब चीज़ें हैं. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर कि यू सी देयर इज लॉस ऑफ म्यूकस, द वॉल ऑफ द स्टमक म्यूकोजल लाइनिंग जो है वो एटीन्यूएट कर रही है, एंड अल्टीमेटली यू सी देयर इज अ
an ulcer formation. There is discontinuity of the normal mucosa, so you really get an ulcer. और अल्सर का एक प्रॉब्लम सारा ये है कि देखें ये अब एसिड्स के लिए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं है. आपका ये जो हेल्दी वॉल था, यहाँ फॉर एग्जांपल एसिड्स हैं आपके स्टमक में रिलीज हो रहे हैं, तो ये वॉल प्रोटेक्ट करती है बाकी पूरे स्टमक के स्ट्रक्चर को. लेकिन अगर ये अल्सर बन जाए तो नाउ दिस इज प्रोन टू डैमेज. तो अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, नेक्रोटिक डेब्री होगा, और अगर ये अंदर जाकर के किसी ब्लड वेसल को टच करेगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी. सो अल्सर इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव. ओके, सो ये सब कुछ हो सकता है इन एक्यूट गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोपैथी. पैथोजेनेसिस की क्या है? द गैस्ट्रिक ल्यूमेन इज स्ट्रांगली एसिडिक. ये हमको पता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग HCl बन रहा है वहाँ पे, और pH जो है दैट इज अराउंड more than 1 million times more acidic than the blood. Blood की जो pH है that is about 7.4, और यहाँ पे pH देखो कितनी कम है, very very acidic. मैं हमेशा कहता हूँ it's just like battery acid in the stomach. This harsh environment contributes to digestion but also has potential to damage the mucosa. So ये एक तरह से important भी है आपके लिए, ताकि जो food वगैरह आप ले रहे हैं वो अच्छे से digest हो सके. Multiple mechanisms have evolved to protect the gastric mucosa, such as we have the mucin secreting cells, we have mucus layer to promote formation of the unstirred layer of fluid. तो ये एक जो unstirred layer of mucus fluid बन जाता है, that is a protective layer. Finally, there is very rich blood supply of the gastric mucosa, which efficiently buffers and removes the proton. So we have kind of some mechanism available, जिसकी वजह से जो acidic, erosive environment है और dangerous environment है stomach का, उससे आपकी stomach wall बचती है, safe होती है. Gastropathy और acute gastritis में ये सारे factors affect होना शुरू हो जाते हैं, such as NSAIDs के use में what happens? There is inhibition of cyclooxygenase dependent synthesis of prostaglandin E2 and I2, which stimulate nearly all of the above defense mechanism including mucus, bicarbonate, mucosal blood flow. और ये सब चीज़ें अगर stimulate नहीं होंगी because ये दो prostaglandins नहीं बन रहे तो ulcer formation हो जाएगा ना यार. So NSAIDs are known to cause ulcers. Although COX-1 plays a larger role than COX-2, both isozymes contribute to the mucosal protection. And if you use NSAIDs, there is COX-2 inhibition. That's why you are more prone to getting ulcers. अब इसमें एक उसका जुगाड़ ये निकाला है लोगों ने कि NSAIDs जो है ये generically दोनों को affect करती है. Then people start using more COX-2 selective inhibitors such as celecoxib. उससे होता ये है कि COX-2 अगर inhibit हो भी रहा है तो COX-1 जो है वो बचा हुआ है, तो that is then contributing to the protection of the mucosal wall, और सिर्फ COX-2 आप inhibit कर रहे हैं. But anyways, NSAIDs, the bottom line of this paragraph is the fact that NSAIDs can cause ulcers and acute gastritis. Okay, the gastric injury that occurs in uremic patients and those infected with H. pylori, which also is a urease secreting bacteria, may be due to inhibition of the gastric bicarbonate. और अगर बाइकार्बोनेट को आप इनहिबिट कर देंगे तो हाइड्रोजन आयन जो पहले ही बहुत ज्यादा है स्टमक में, अब इनको बफर करने के लिए कुछ भी नहीं है. So that can be dangerous. Okay. Now, reduced mucin and bicarbonate secretion have been suggested as factors that explain increased susceptibility to older adults to gastritis. So age is also a predisposing risk factor. Then hypoxemia and decreased oxygen delivery may account for increased incidence of gastropathy. Particularly at high altitude where you have lower oxygen. So patients who are susceptible to, for example, ulcer formation go to high altitude. अगर कोई NSAIDs use कर रहा है और high altitude पे है तो chances of getting gastritis are higher. Ingestion of harsh chemicals, particularly acids or bases, either accidentally or in a suicidal attempt, leads to severe gastric mucosal damage as a result of direct injury to the mucosa. That's fine. I mean, आप अगर एसिड ले लेंगे, पहले यार एसिड है वो जाकर के इरोड करेगा. सेम अल्कली विल डू. ठीक है, तो ये तमाम कॉमन कॉजेज हैं टू हैव गैस्ट्राइटिस. ऑलराइट. Okay, then what we need to talk about is stress-related mucosal disease. मैंने आपसे कहा कि stress में भी ulcers होते हैं. So stress-related gastric injury occurs in patients with severe trauma, extensive burns, intracranial diseases, major surgery. These are all stressful situations, okay? Or even if there is physiological stress, अगर आप literally किसी भी situation की वजह से severe stress में हैं, that is also a predisposing factor to get ulcers. More than 75% of critically ill patients
develop endoscopically visible ulcers, so long chronic illness है, particularly in the first 3 days of their illness. In some cases, associated ulcers are given specific names, such as stress ulcers, जो कि critically ill patients में हैं. Curling ulcers, जो कि proximal duodenum में होते हैं ज़्यादातर and are associated with burns and trauma, also with stress. Cushing ulcers, they arise in stomach, duodenum or esophagus, and they are particularly there with intracranial diseases having a high incidence of perforation. So ये particular नाम दिए गए हैं कि इन situations में gastric या GI ulcers बनते हैं. और इसकी pathogenesis basically क्या होती है? That's सारा कुछ जो भी वजह है, ultimately it comes down to local ischemia. अगर ischemia होगा, so if there is less blood supply, so ischemia leads to damage to the mucosal wall. Okay. So, in tamam ulcers की bottom line root cause local ischemia. This may be caused by systemic hypotension or reduced blood flow resulting from stress-induced splanchnic vasoconstriction. So, for any reason, if there is reduced blood flow, it can lead to ulcer. Upregulation and increased release of vasoconstrictor endothelin-1 also contributes to ischemic gastric mucosal injury, while COX-2 expression, increased COX-2 expression appears to be protective. So that's a good thing for you. You don't want to inhibit this. इसीलिए जब NSAIDs ले रहे हैं तो वो selective NSAIDs लेते हैं और this is probably good for you. Cushing ulcers are thought to be caused by direct stimulation of vagal nuclei resulting in acid hypersecretion. Systemic acidosis may also contribute to mucosal injury by lowering the interstitial. So ये तमाम factors हैं जिसकी वजह से ulcer बन सकते हैं. Either there is local ischemia or there is vasoconstriction because of any reason. Vasoconstrictors such as endothelin की अगर overexpression है, that is also a cause. Vagus की overstimulation है तो acid secretion बढ़ जाएगी. ये तमाम चीज़ें can cause to these ulcers which are damaging the mucosal wall of the stomach. और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? मोस्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट हैव हिस्टोलॉजिक एविडेंस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज. ज़्यादातर क्रिटिकली इल पेशेंट्स में गैस्ट्रिक अल्सर्स होते ही हैं. अल्सर्स आर एसोसिएटेड विद नॉजिया, वॉमिटिंग, मेलेना मतलब ब्लैक स्टूल्स, ब्लीडिंग हो रही है अल्सर से तो वो स्टूल में जा रही है, एंड कॉफी ग्राउंड हेमेटेमेसिस, उल्टियों में ब्लड आ रहा है. ब्लीडिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल गैस्ट्रिक इरोजन्स और अल्सर मे रिक्वायर ट्रांसफ्यूजन. इतनी ब्लीडिंग भी हो सकती है sometimes that you need transfusion in 1 to 4% of the patient. That's not a very small number. It's actually a big number. 1 to 4% is a big number. 100 में 4 patients को आपको blood देना पड़ेगा, extra exogenous blood. मतलब that is like इतनी severe bleeding, so that is something serious. Okay. Prophylaxis with PPIs, proton pump inhibitors, may blunt the impact of the stress ulceration because आप acid की quantity को block कर रहे हो PPIs use करके. So sometimes we use this. So ये सारी कहानी थी acute gastritis की और gastropathy की. We talked about NSAIDs, we talked about alcohol, we talked about, well, we actually didn't talk much about alcohol, but that also causes ulcer by ischemia and all the factors that we discussed. H. pylori infection by producing big amounts of urea. Now we have to talk about chronic gastritis. So acute gastritis की definition में important चीज़ क्या है कि there are symptoms plus neutrophils in the histopathology. और अगर immune cells नहीं है then we call it gastropathy. The most common cause of chronic gastritis is infection with a bacillus called Helicobacter pylori. It also causes acute gastritis, but if it persists, it causes chronic gastritis as well. Autoimmune gastritis also is an important cause, typically associated with gastric atrophy, represent less than 10% of the total chronic. H. pylori is the most common. Chronic NSAID use, अगर कोई बंदा NSAID acute gastritis भी करेगा और अगर chronic use है NSAIDs का, तो it will also cause chronic gastritis. The signs and symptoms associated with chronic gastritis are less severe but more persistent. यानी पेशेंट को हर वक्त ये nausea, upper abdominal pain, vomiting की situation है मेरे, chronic है ना, so it's chronic. Yeah. Then अब इन factors को भी जरा डिस्कस करना है कि H. pylori से important gastritis से associated बातें क्या क्या हैं. The discovery of the association of H. pylori with the peptic ulcer disease actually revolutionized the understanding of the chronic gastritis. These organisms, which are actually curved bacilli, are present in the gastric biopsy specimen from almost all patients with the duodenal ulcer. तो duodenal ulcer के साथ heavy association है H. pylori infection की.
Acute H. pylori infection is subclinical in most cases. आप में मुझ में हो सकता है बहुत से लोगों में पॉजिटिव हो लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है. Rather, it is chronic gastritis that ultimately brings the afflicted person to the medical attention. So ये होता है बॉडी में, इन्फेक्ट करके रखता है हमारे स्टमक को, और उससे जब chronic gastritis होता है तब पेशेंट उस कंप्लेन की वजह से क्लिनिक जाता है. अदरवाइज H. pylori बहुत से लोगों में we are harboring H. pylori but we don't know because अभी chronic gastritis की स्टेज पहुंची नहीं होती. Okay, it produces it is gastritis और ये सब बातें हो गई. The increased acid production may give rise to peptic ulcer disease of the duodenum or stomach. While in most cases H. pylori gastritis is limited to the antrum, यानी स्टमक का ये वाला रीजन, दैट इज द एंट्रम पोर्शन ऑफ द स्टमक, बट इसके दूसरे एरियाज भी अफेक्ट हो सकते हैं. सम इंडिविजुअल्स इट प्रोग्रेसेस टू इन्वॉल्व द बॉडी एंड द फंडस एज वेल. Reduced acid output result in hypergastrinemia as an autoimmune atrophic gastritis. ये autoimmune अभी मैं इस पर comment करूँगा, so let's hold for a moment now. In addition, extension of gastritis to the gastric body and fundus result in intestinal metaplasia and therefore increased risk of gastric cancer. So H. pylori is perhaps the only bacterial microorganism which is very strongly associated with the cancer. और उसका रीज़न ये है, इट इंड्यूसेस मेटाप्लेजिया इन द स्टमक. सो मेटाप्लेजिया का मतलब ये है कि एक एपिथेलियल सेल टाइप जो है वो दूसरी एपिथेलियल सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाती है विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर. In the US, H. pylori infection is associated with poverty, यानी if the dietary practices are not good, socio-economic status के साथ associated है, household crowding, limited education, residence, these are all the factors which increases the risk of H. pylori infection. Infection is typically acquired in the childhood and may then persist for the whole life. Improved sanitation in many areas likely explain the H. pylori infection rates. More sanitation, hygienic food, इससे improve होती हैं चीज़ें और ये infection कम होता है. Okay, so these are the major factors. Also in our countries like India, Pakistan, Bangladesh, these are the factors. Overcrowded, unhygienic food practices, these are all increasing the risk of H. pylori. और एक दफ़ा H. pylori body में घुस गया, ulcer कर सकता है, chronic gastritis कर सकता है. H. pylori have adapted to the ecological niche provided by the gastric mucus. It lives very happily there. Although H. pylori may invade the gastric mucosa, the contribution of invasion to the disease of pathogenesis is unknown. We don't know कौन से pathogenic factors हैं, but इसके virulence है linked to the flagella which is present in H. pylori. इस flagella की वजह से ये पूरे इतना देखो stomach का जो mucus है ना, ये इतना thick होता है, ये उसमें भी travel करता है, तैरता है मजे से इधर उधर. So ये देखें, that's a very thick mucus layer. तो इसके अंदर imagine a little H. pylori with a little flagella moving all the way in the stomach. So it can move with the flagella. It's an important virulence factor. Then it contains a special enzyme which is called urease. It generates ammonia from the endogenous urea. जो हमारी बॉडी में यूरिया बन रहा है उससे अमोनिया बनाएगा और लोकल पीएच बढ़ेगी. उससे पीएच बढ़ेगी तो अल्सर्स वगैरह के चांसेस, पहले पीएच कम है कि स्टमक में जो और बढ़ेगी. सोचें, the bacteria also contain adhesions which enhance the bacterial adherence to the surface of the foveolar cell. So mucus producing cells भी damage होते हैं. It has also some important toxins such as the CAG-A, which is the cytotoxin associated gene A, and it is very much involved in metaplasia and cancer development. These factors allow H. pylori to create an imbalance between the gastroduodenal mucosal defenses and damages the defense mechanism and therefore causes ulcer. So ये सारे इसके हथियार हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये यूज करता है. In addition to the histological identification of the organism, there are some diagnostic tests available. For example, for anti-H. pylori antibodies, we can also order PCR reactions. Histopathology तो है ही अगर बायोप्सी की है, और सिम्टम्स इसके होते हैं chronic gastritis के symptoms या acute gastritis के symptoms, which include heartburn, which include pain in the epigastric region, which includes nausea, vomiting, even hematemesis अगर अल्सर का जो बेड है वो किसी ब्लड वेसल को इरोड करता है. So all these are serious stuff. Okay. Now the autoimmune gastritis. Autoimmune gastritis account for less than 10% of the cases of chronic gastritis, but most of the cases are basically associated with H. pylori infection. Okay. In contrast to H. pylori associated gastritis, autoimmune gastritis typically spares the antrum. एंट्रम बच जाता है, यानी ये वाला जो रीजन है ये स्पेयर हो जाता है और बाकी पार्ट्स ऑफ द स्टमक आर अफेक्टेड. ओके,
and induces marked hypergastrinemia. So that's a very typical feature of autoimmune gastritis. Hypergastrinemia, gastrin के levels बढ़ जाते हैं. Autoimmune gastritis is characterized by the following: antibodies to the parietal cell, reduced serum pepsinogen level, enteral endocrine hyperplasia, all the factors that you should remember. Vitamin B12 deficiency, gastric achlorhydria, इनके बारे में भी थोड़ा हमने डिस्कस करना भी है. Autoimmune gastritis is associated with immune-mediated loss of the parietal cell and subsequent reduction in the acid and intrinsic factor. So parietal cells जब damage होंगे, and why? Because we have autoantibodies. So these are the happy living parietal cells जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं. अब आपके एंटीबॉडीज हैं, दीज एंटीबॉडीज स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दीज सेल्स एंड डैमेज दैम. इनको करना तो नहीं चाहिए ऐसे, बिकॉज ये आपकी अपनी एंटीबॉडी है और ये आपका अपना प्रोटीन है, लेकिन ये एंटीबॉडी तो अब पागल हो गई है ना. दीज आर रोग एंटीबॉडीज, और इसीलिए हम इनको नाम देते हैं ऑटो एंटीबॉडी. ऐसी एंटीबॉडी जो आपके अपने ही प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके उसको डैमेज कर रही है. सो दैट इज नाउ समथिंग वेरी वेरी सीरियस. ओके, राइट. Antibodies to these parietal cells ultimately will lead to the destruction of the parietal cell. और जब parietal cell destroy हो जाएंगे तो there will be reduction in acid production as well as intrinsic factor production. Now deficient acid secretion stimulates gastrin release resulting in hyper. इसीलिए मैं यहाँ पे एक बात आपको बता रहा था कि autoimmune gastritis जो हैं they are associated with hypergastrinemia. So that's the mechanism, by inhibition of the cells and subsequently loss of acid production. So acid नहीं होगा तो gastrin ज़्यादा release होगा as a reflex और hypergastrinemia की situation होगी. Okay, and hyperplasia of the enteral gastrin producing G cells. Because gastrin is more released, so there is hyperplasia of the gastrin producing cells. अच्छा, इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं बनेगा. सो दो काम हो रहे हैं ना. अगर ये जो सेल्स हैं जो डैमेज हो रहे हैं parietal cell, तो अब एक तो एसिड नहीं निकल रहा. अब एसिड नहीं निकल रहा तो उससे गैस्ट्रिन ज़्यादा निकल रहा है एज अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, हाइपरगैस्ट्रीनीमिया. दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकल रहा. इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? देयर विल बी B12 डेफिशिएंसी, बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर B12 एब्जॉर्प्शन. तो ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए विद ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस. ओके, although H. pylori can also cause hypochlorhydria, it is not associated with achlorhydria. complete absence नहीं होता और pernicious anemia. लेकिन अगर autoimmune problem है तो ये सब मसले शुरू हो जाते हैं. megaloblastic anemia particularly, and this megaloblastic anemia because of the intrinsic factor deficiency is known as pernicious anemia. Clinical features क्या होंगे? Antibodies to the parietal cells and intrinsic factor are present in the disease, so it can be identified in the lab. But B12 deficiency and pernicious anemia develop only in minority of the patients, so that's the good news. The median age of diagnosis is about 60 years. Oh my God! इतनी देर से पता चलता है कि किसी बंदे को autoimmune gastritis है. इतना time लगता है. Autoimmune gastritis often is associated with other autoimmune diseases as well because they share the same HLA loci in their genomic composition. Okay. So these are two important comparatives between H. pylori associated chronic gastritis and autoimmune. Location wise, inflammatory infiltrate wise, acid production, gastrin production, and other stuff. So for example, if somebody is infected with H. pylori infection, location is usually in the antrum of the stomach, and autoimmune affects, it spares the antrum and affects the body. Inflammatory infiltrate H. pylori वाले केस में होंगे neutrophil and some plasma cells. Autoimmune में they are usually lymphocytes and macrophages. Acid production is decreased in autoimmune disorder because parietal cell damage हो जाते हैं, और acid production is actually increased, if decreased only slightly, in H. pylori infection. So these are important comparatives. Okay, serology में आपको antibodies मिलेंगी H. pylori की, यहाँ antibodies मिलेंगी to parietal cells. Yeah. Or sequelae, peptic ulcer, adenocarcinoma, lymphoma, and here atrophy, pernicious anemia, adenocarcinoma also sometimes, and carcinoid tumor. So these are very important comparative to differentiate between H. pylori associated gastritis or autoimmune gastritis. Okay, now some complications कि chronic gastritis से मसले क्या होंगे? एक तो peptic ulcer होगा, मतलब gastritis है ना, सोचें कि there is irritation, so ulcer formation, और वो ulcer formation फिर कहलाता है peptic ulcer formation, which is very much associated with NSAIDs and H. pylori, और इसमें basically stomach भी affect होता है और duodenum भी affect होती है, and the name peptic ulcer disease includes the both. Okay,
Now, peptic injury may occur in esophagus as well as a result of GERD. ये हम esophagus में पढ़ चुके हैं, so not the topic here. Peptic ulcer disease is common and is frequent cause of physician visits worldwide. It leads to treatment of over 3 million individuals. So very heavy healthcare burden. That's the bottom line here. अच्छा, pathogenesis की थोड़ी सी अगर बात करें, H. pylori infected as well as NSAID affected individuals are the primary underlying cause of the. ये दो main चीजें हैं जो peptic ulcer disease cause कर रही हैं. More than 70% of the peptic ulcer disease are caused by H. pylori. There you go. This is the most important cause. Gastric acid is the fundamental to pathogenesis of peptic ulcer disease. Hyperacidity may be caused by H. pylori infection, parietal cell hyperplasia, and excessive secretory response. All of these increases the level of acid and it causes problem. अब एक एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दी है Zollinger Ellison syndrome की. This is a gastrin-releasing tumor characterized by multiple peptic ulcers in the stomach, duodenum, and even jejunum caused by uncontrolled release of gastrin by a tumor. एक tumor बन गया stomach में जिसका काम ही gastrin release करना है. तो सोचें, all the time increase hydrogen, increase hydrogen, increase hydrogen. Okay, and you are getting more and more acid, and you are getting more and more diseased. Also, these peptic ulcers, NSAID, cigarette smoking, these are all the risk factors which increase the chances of getting these ulcers. Clinical features: epigastric pain, etching pain, frank hemorrhage, iron deficiency anemia because of continuous bleeding, even perforation. So perforated peptic ulcer is a nightmare because what you are now doing is there is a perforation and the air is into the peritoneal cavity. Oh my God, big laparotomy required to treat these patients. Peptic ulcer disease cause much more morbidity than mortality. More morbidity than mortality. Severe disease, okay? Severe disease. A variety of surgical procedures have been performed to treat the peptic ulcer disease, but current therapies include H. pylori eradication. फसाद की जड़ है H. pylori. इसको ख़त्म करना है. इसको ख़त्म कर दें तो disease most of the time ख़त्म हो जाती है. And there is a specific regimen for H. pylori eradication. Medicine में पढ़ेंगे. Mucosal atrophy and intestinal metaplasia. Metaplasia is always a change of epithelium from one type to the other. And H. pylori causes this. So therefore, it causes metaplasia, and from metaplasia it causes cancer formation. Dysplasia. Chronic gastritis exposes the epithelium to inflammation related free radical and proliferative stimuli. Over time, this can lead to accumulation of the genetic alteration. So you now have an epithelium which is genetically altered, dysplastic. This is prone to get tumor. So that's kind of a precancerous condition. All happens in chronic gastritis. So chronic gastritis अगर है और persistent inflammatory environment hai, either because of H. pylori or because of NSAIDs use or because of any other reason which is persisting there chronically, it can lead to metaplasia and dysplasia. Okay, and after metaplasia and dysplasia, now we have to talk about gastric tumors. अब चाहे gastric polyps हों या gastric tumors हों, they almost always develop at the background of chronic inflammation. So that's the point. अगर gastritis होगा, तो there are always chances of getting polyps. Okay, these polyps are nodules or masses that project above the level of the surrounding mucosa. ये इस तरह से होते हैं कि अगर ये stomach है, so polyp can be seen a growth something like this. Usually it is pedunculated and it is projecting above the level of the mucosa. They are identified in up to 5% of the upper GI biopsies, not the biopsies, sorry, endoscopies. Polyps are, they may develop as a result of epithelial or stromal hyperplasia or at the background of inflammation, or they can be developing in the background of cancers actually. Although many different types are identified, some of them are as follows. Inflammatory polyps, also called hyperplastic polyp, they make up to 75% of all the gastric polyps, and they are because of chronic inflammation, okay, particularly because of H. pylori gastritis, and they usually also regress if you address the bacterial eradication, H. pylori eradication program. अगर वो आप ट्रिपल regime यूज करते हैं, इस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, तो ये पॉलिप्स चले जाते हैं. That sort of thing. The frequency with which dysplasia, a precancerous in situ lesion, develops in these polyps correlate with the size. There is a significant increase in the risk if the polyps are larger than 1.5. So although usually most of the time they are benign, but if they are pretty large polyps, they have a preponderance to develop cancer. Okay, जितना बड़ा उतना कैंसर होने का चांस ज्यादा. Then there are fundic gland polyps, usually occur sporadically and in individuals with the familial adenomatous polyposis associated with FAP, but not.
अब ये जो फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक एसोसिएशन विद द फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, जो कि कोलोन को भी अफेक्ट कर सकता है, स्टमक को भी करता है. द इंसिडेंस ऑफ द स्पोरेडिक लीजन हैज इंक्रीज मार्कली एज अ रिजल्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पीपीआई. सो पीपल आर थिंकिंग दैट दे आर अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, use of PPIs. This likely result from increased gastrin secretion in response to reduced, ऐसे ये सारा रिफ्लेक्स फिनोमिना है ना. आप PPI यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एसिड प्रोडक्शन को सप्रेस कर रहे हैं, एज अ रिफ्लेक्स गैस्ट्रिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, एंड दैट मे कॉज दीज पॉलिप्स. Okay, these well circumscribed polyps usually occur in the gastric body, and they are usually benign. That's the good news about them. Now, gastric adenomas represent about only 10% of all the gastric polyps. So these are benign tumor of the gastric mucosa or the glands. Their incidence increases with age and varies among different populations in parallel with their of gastric adenocarcinoma. So basically, badi age ki disease hai 50 to 60. Okay. Adenomas almost always occur on the background of chronic gastritis, so that is also a linking factor. All GI adenomas exhibit epithelial dysplasia, which can be classified as low or high grade. The risk of developing a cancer in gastric adenoma is related again to the size. If the adenoma is bigger, such as 2 centimeter or more, the chances of getting tumors are there. So, ये जो gastric polyps हैं, by and large they are benign, but they are not 100% of the times benign. They have a malignancy potential, such as inflammatory polyps. अगर size बड़ा है, malignant हो सकते हैं. Adenomas अगर size बड़ा है, malignant हो सकते हैं. Okay, और they are all associated with inflammation. H. pylori associated inflammation is a risk factor. अब बात करते हैं गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा. बिकॉज गैस्ट्रिक सिस्टम इज अ ग्लैंडुलर सिस्टम, इसमें काफ़ी सारे ग्लैंड्स हैं जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो ग्लैंड्स में अगर कैंसर हो रहा है, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स. अभी हम देखेंगे कि स्टमक में लिम्फोमा भी होता है, स्टमक में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स भी हैं, जिस्ट जिनको हम कहते हैं. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, बट द मोस्ट कॉमन वन आर द गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा. ओके, एंड देयर सिम्टम्स इंक्लूड डिस्पैप्सिया, डिस्फेजिया, वेट लॉस, nausea, vomiting, hemorrhage, melena, all these sort of thing. और एपिडेमियोलॉजी अगर आपने करंट फॉलो करनी है, यू शुड विजिट द ग्लोबोकैन वेबसाइट, जिसमें आपको पूरी दुनिया की कैंसर एपिडेमियोलॉजी मिलती है. बट the bottom line is that it is a very high burden disease, gastric cancer. The incidence is up to 20 times higher in Japan, Chile, Costa Rica, ईस्टर्न यूरोप, और ये एरियाज हाई रिस्क एरियाज हैं. मास एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैव बीन सक्सेसफुल इन रीजन्स ऑफ हाई इंसिडेंस सच एज जापान, जहां बहुत ज़्यादा हाई गैस्ट्रिक कैंसर का प्रेवलेंस है. जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और डाइटरी फैक्टर्स भी हैं. It's more common in lower socioeconomic people because again it is linked with H. pylori if you think about it. So lower socioeconomic status is also a risk factor for H. pylori infection. It's also a risk factor for gastric cancer. Peptic ulcer disease does not impart an increased risk for the development of the cancer, but patients who have had partial gastrectomies for peptic ulcer disease have a slightly higher risk. It's too much detail, इसकी आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना. In the United States, gastric cancer rates have dropped by more than 85% during the 20th century. Similar decline have been reported in many other regions, reflecting the importance of environmental and dietary factors. So they've kind of improved the hygiene and dietary practices, so reducing the H. pylori infection and the cancer epidemiology. There can be so many different pathogenic events जो gastric cancer cause करते हैं, but remember H. pylori is a key bacteria. देखिए बार बार इसका नाम आ रहा है. There are some mutations which are associated with the gastric cancer. For example, अगर germline mutation की बात करें तो CDH1, it means basically it is present and it is transferred by the zygote. So sperm, ovum, germline mutation. Parents में germ cells में mutation थी. Germline mutation in CDH1, which is actually a gene encoding for E-cadherin protein. तो इसमें mutation is associated with the familial gastric cancer because that's germline mutation. Family से transport हुई है तो familial cancers, usually of diffuse type. By comparison, mutation in the CDH1 are present in about 50% of the sporadic diffuse gastric tumors. So, point ये है कि CDH1 आपने एक नाम याद रखना है और ये associated है with the development of gastric cancer. Because अगर इसमें mutation है तो E-cadherin नहीं बनेगा and loss of E-cadherin is an important step.
In contrast to CDH1 mutated patients with familial adenomatous polyposis who have germline mutation in the APC gene, जो कि colorectal cancer के साथ भी associated है, they have also increased risk of development of gastric cancer, also of colon cancer. Sporadic intestinal type gastric cancer is associated with several genetic abnormalities, including mutation in the beta-catenin, in the E-catenin, तो हमने ऊपर बात करी भी, CDH1, APC protein, also hypermethylation of all these genes. So a lot of genetic mutations are actually known. So mutations are very common in gastric tumors. Then H. pylori तो है ही. H. pylori causes chronic inflammation, increased TNF, interleukin beta, and all these things, which makes an environment of chronic inflammation, which is itself a high risk for gastric cancer. Then Epstein-Barr virus is coming up these days. I mean, initially it was supposed to cause only the nasopharyngeal carcinoma, but now NPC ke साथ gastric cancer is also very well established, caused by Epstein-Barr virus, okay? And it also causes some mutations such as P53 mutation caused by Epstein-Barr virus. It also causes lymphoma of the stomach. Then the clinical features, gastric cancer के क्या क्या होंगे? Obviously कैंसर के जो general features होते हैं वो सब होंगे, जिसमें कैचिक्सिया है, एनीमिया हो सकता है, but then specific to stomach है तो loss of appetite, there can be epigastric pain, bleeding, all these are the important clinical features, okay? The depth of invasion and extent of the nodal, obviously अगर malignancy है तो it will metastasized local invasion भी होगा और lymph node और venous drainage के जरिए other parts of the body में भी पहुंचेगा. So depth of invasion and the extent of the nodal and distant metastasis at the time of diagnosis remain the most powerful prognostic indicator. यानी अगर patient आपके पास पहली दफ़ा clinic में आ रहा है और वो body में metastasize हो चुका है cancer तो उसकी prognosis बुरी है. लेकिन अगर patient early आपके पास आ रहा है और अभी ये मेटास्टेसाइज नहीं हुआ कैंसर तो देयर इज गुड प्रोग्नोसिस. When possible, surgical resection remains the preferred treatment. After surgical resection, the 5-year survival is more than 90%. So it's a good prognosis tumor, by the way, if treated early on. By contrast, the 5-year survival rate for advanced gastric cancer remains below 20. So अगर patient बहुत late आपके पास आ रहा है तो बहुत ही कम chances हैं. In some recent studies, HER2 receptor, Herceptin, जो breast cancer में basically use करते हैं, it is also being used in some gastric cancers, particularly in those gastric cancers जिनमें HER2 express हो रही है. So these are some clinical stuff. अब एक और category है tumor की, ये तो था gastric adenocarcinoma, the most common one, okay? Now there is also lymphoma in the whole GI tract basically, और stomach में भी हो सकता है. Because GI tract में एक specific किस्म का lymphoid system है, mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa में ये lymphoid tissue है, so it can go crazy and form lymphoma, या फिर उसको हम नाम देते हैं maltoma. Maltoma इसलिए क्योंकि mucosa associated lymphoid tissue का tumor है, ठीक है? Although the extranodal lymphomas can arise in virtually any tissue, they do so most commonly in the GI tract, particularly in the stomach. इन एलोजेनिक हेमेरो अब ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है. माल्टोमास का वर्ड आपने याद रखना है. एंड द एंटिटी एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी लिम्फोमा ऑफ द गट इज द डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, जिसे हम कहते हैं DLBCL, diffuse large B cell lymphoma, very common. So maltomas and DLBCL are the two lymphomas that can happen in the stomach. Then there is a very important category called the carcinoid tumor or the neuroendocrine tumor. They are also called carcinoid tumor. ये नाम याद रखना है. Arise from the neuroendocrine organs. आपको पता है ना ये neuroendocrine organs क्या चीज़ है? Refer to my lectures on neuroanatomy. And the neuroendocrine differentiated gastrointestinal epithelia, such as the G cells. A majority of these tumors are found in the GI tract and more than 40% occur in the small intestine. The tracheobronchial tree and the lungs are the next most common involved site for the carcinoid tumor. So GI tract is the most common site, by the way. Gastric neuroendocrine tumors may be associated with endocrine cell hyperplasia, chronic atrophic gastritis, Zollinger-Ellison syndrome, because there is a lot of gastrin production. They were called carcinoid because they are slower growing than carcinomas. So carcinoid, cancer की तरह, just like cancer. Carcinoid, जैसे human की तरह phone है तो android, it's like humanoid, human की तरह. समझ रहे हैं बात? The most current WHO classification describes these low or intermediate grade neuroendocrine tumors. High grade neuroendocrine tumors are termed as neuroendocrine carcinoma themselves. Okay, they resemble the small cell carcinoma of the lung and in the GI tract,
the most common in the jejunum. So ये सारी important बातें यार जो आपने याद रखनी है basically, ठीक है? Clinical features: the peak incidence of the neuroendocrine tumors is in the 6th decade. So again elderly की disease है. Symptoms include बेसिकली डिपेंड ऑन द हार्मोन. जो हार्मोन एंडोक्राइन का ट्यूमर है ना, एंडोक्राइन सेल्स का, सो जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वैसे सिम्टम्स होंगे. फॉर एग्जांपल, द कार्सिनोइड सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वेजोएक्टिव सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द ट्यूमर. इट कॉजेज फ्लशिंग ऑफ द स्किन, sweating, bronchospasm, colicky abdominal pain. So these are the symptoms of carcinoid syndrome. When tumors are confined to the intestine, these vasoactive, यानी जो blood vessels पे act करेंगे, substances released are metabolized to inactive form by the liver, which is the first pass. ये हर drug में भी होता है कि liver में जाएगी चीज change हो जाएगी. Effect similar to that seen with the oral drugs. Thus, carcinoid syndrome occurs in less than 10% of the patient and is strongly associated with metastatic disease. तो इसमें metastasis common है. The most important prognostic factors are foregut neuroendocrine tumor found within the stomach, duodenum, proximal ligament of teeth, esophagus, rarely metastasize. So if these are the location, it's a good news. That sort of thing, okay? So location wise prognostic factor. Midgut neuroendocrine carcinoid tumor arise in the jejunum and ileum and often multiple and tend to be aggressive. So if these are the location, they are aggressive. Hindgut में अगर है and they are typically discovered actually incidentally, यानी किसी symptom के साथ present नहीं करता. They can be in any age. So these one are the worst one basically, okay? Then the last category of tumor that you have to know about the stomach is the gastrointestinal stromal tumor. GIST, GIST is the most common mesenchymal tumor. देखिए सबसे common tumor कौन सा था? Gastric adenocarcinoma. उसके बाद there are lymphomas. Lymphomas में सबसे common maltoma. There can also be DLBCL and there can be carcinoid tumors. Carcinoid tumor GI tract में भी होते हैं और lungs में भी होते हैं. Most common site is the GI tract. Now we have to talk about the GIST. This is the most common mesenchymal tumor of the abdomen, and more than half of these occur in the stomach. So again, stomach में common है GIST. A wide variety of other mesenchymal neoplasms may arise in the stomach. Many are named according to the cell type they mostly resemble. For example, leiomyoma. Leiomyoma is for the smooth muscle, or leiomyosarcoma. Smooth muscle का tumor अगर benign है leiomyoma, और अगर malignant है तो leiomyosarcoma. Nerve sheath tumors such as schwannomas. They can be, resembling the glomus body, so glomus tumors. So these are all named according to the cell type. Okay. The most common genetic change underlying the pathogenesis of GIST is gain-of-function mutation of the gene encoding for KIT, tyrosine kinase KIT, the receptor for stem cell factor. Important information students पूछते हैं exam में. These are present in 75 to 85% of all the GIST. So ये mutation आपने याद रखनी है. Mutation in KIT. An additional 8% of the GIST have mutation in the PDGFRA, और उसका full form है platelet derived growth factor receptor A. The term stromal reflects historical confusion about the origin of this tumor, which is now recognized to arise from the intestinal cells of Kegel और pacemakers of the intestine. ये आपको पता है ना, तो इन tumors में ये arise होता है tumor. For unknown reason, GISTs are bearing the PDGFRA mutation are overrepresented in stomach. KIT and PDGFRA mutations are mutually exclusive, reflecting their activity within the same signal transduction pathway. Germline mutations, यानी parents से inherit हुई हैं, in these same genes are present in rare familial, so it is also associated with the genetic family history. Both sporadic and germline mutations वो हैं जो आपको फैमिली में मिलती हैं, स्पर्म या ओवम से आपके पास आती हैं. स्पोरेडिक वो हैं जो आपकी बॉडी में सडनली जनरेट होती हैं. सो अगर ब्रेस्ट टिश्यू है तो इसमें अगर कोई सेल में म्यूटेशन हो गई विदाउट एनी जेनेटिक इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड स्पोरेडिक, और ये स्पोरेडिक ट्यूमर बनाएंगी और नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगी. ठीक है. In GIST without KIT or PDGFRA mutation, genes encoding component of mitochondrial succinate dehydrogenase complex are most commonly affected. My God, so that's some hardcore information there. आपको adenocarcinoma की मैंने कुछ mutations बताई थी. Where is adenocarcinoma? CDH1, FAP में हमने बात की थी, कुछ mutations हैं, beta catenin में mutation, इन तमाम genes की hypermethylation. Now we are talking business. GIST में काफी सारी म्यूटेशंस हैं. किट का नाम याद रखना है, PDGFRA का नाम याद रखना है, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज की म्यूटेशन नाम याद रखनी है,
HIF, hypoxia inducible factor. So all these mutations are important यार. ये बड़ा रिच किस्म का टॉपिक है. जिस्ट सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि शायद बड़े अनकॉमन ट्यूमर हैं, बट इतनी सारी म्यूटेशंस नोन हैं, तो ये सारी म्यूटेशंस आपको पता होनी चाहिए. द पीक इंसिडेंस ऑफ जिस्ट इज अराउंड 60 ईयर. सो आप देखें तमाम स्टमक के जो कैंसर्स हैं, दे हैव ओल्ड एज एसोसिएशन, with less than occurring in the individuals younger than 48, but less than 10 भी, मतलब 10% भी 40 years की एज में हो रहे हैं. सो यंग पॉपुलेशन में भी कॉमन है. ओवरऑल जिस्ट आर स्लाइटली मोर कॉमन इन मेल्स. स्मॉल जिस्ट मे कम टू क्लिनिकल अटेंशन इंसिडेंटली, अचानक पता लगता है, बट दे ऑल्सो कैन कॉज GI symptoms. Larger gist may present with symptoms related to mass effect. म्यूकोजल अल्सरेशन है, ट्यूमर बड़ा हो गया, कंप्रेशन हो रही है, एब्डोमिनल मास है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, पेट भर गया, थोड़ा सा खाना खाया, खाना ही नहीं खाया जा रहा. दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर मास इफेक्ट. और अल्सरेशन से ब्लीडिंग और ये सब चीज़ें. इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, दैट्स अ मास इफेक्ट एज वेल. ट्यूमर इतना बड़ा हो गया कि इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई. नाउ कंप्लीट सर्जिकल रिसेक्शन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट. द प्रोग्नोसिस कोरिलेट विद द ट्यूमर साइज, माइटोटिक इंडेक्स एंड लोकेशन, विद गैस्ट्रिक जिस्ट बीइंग समवॉट लेस एग्रेसिव. तो अगर स्टमक में है तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इंटेस्टाइन में है तो मसला है. ठीक है. रिकरेंस और मेटास्टेसिस इज रेयर फॉर जिस्ट इन लेस देन 5 सेंटीमीटर. छोटा ट्यूमर है तो मेटास्टेसाइज नहीं करेगा, बड़ा ट्यूमर है तो गड़बड़ है. ट्यूमर्स दैट आर अनरिसेक्टेबल, यानी अब वो फैल गए इधर उधर, अब उनकी सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं है. और मेटास्टेटिक ऑफन रिस्पॉन्ड समटाइम्स फॉर ईयर्स टू टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स that are active against KIT and PTGFRA, and the drug name is, for example, imatinib. Unfortunately, as in chronic myeloid leukemia, resistance to imatinib has been reported. तो कुछ अर्से तक तो ये ड्रग काम करती है, बट फिर कहानी खराब होना शुरू हो जाती है. इन सम इंस्टेंसेस दीज ट्यूमर्स रिस्पॉन्ड टू अदर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स दैट retain the activity against KIT. But the point is, if I tell you with my experience that we don't have really a good chemotherapeutic drug for GIST tumor treatment. Okay, so that's all about stomach. Next video में फिर हम बात करेंगे intestine की, and then the chapter will be over. So we are talking about chapter number 15, which is the pathologies of GI tract. My name is Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. जुड़े रहिए Dr. Asif Lectures के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिए.